हेलो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपको स्पीच, बहुत ही शॉर्ट स्पीच 1 to 2 मिनट्स वाली स्पीच की कुछ प्रैक्टिस करके बताऊंगा। तो इससे पहले हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स भी शेयर किए हुए हैं। उनमें से एक दो सबसे आसान जनरल टाइप के टॉपिक्स को ले करके और मैं वो 1 मिनट 2 मिनट वाली जो स्पीच की बात आपसे कही थी मैंने, वो कंटेंट मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दे करके बता पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ करना ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा कि हमारे एक दो टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल जो मुझे याद है हमने शेयर किए थे, ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी एक टॉपिक था, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस एक टॉपिक था, डिसिप्लिन हेल्प्स अस टू सक्सीड इन लाइफ एक टॉपिक था। ये कुछ टॉपिक्स मुझे याद से आ रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से ही एक दो उठा करके और 1-2 मिनट का जो स्पीच वाला है हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब भाई स्पीच क्योंकि हमें इंग्लिश में करनी है तो प्रैक्टिस भी इंग्लिश में ही करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जो तीसरा वाला टॉपिक मैंने आपको बताया था, डिसिप्लिन इज एसेंशियल फॉर सक्सेस इन लाइफ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Hello and a very good evening to all of you, my friends. Today we are going to talk about a very important topic, that is, discipline is essential for success. Now, this is not just a thought. Discipline is what you bring on the table when you come for any kind of conversation. Discipline is what you bring into the room when you appear, for example, for an interview, when you appear even for some kind of speech, when you appear for your class, when a teacher comes to the class, and so on and so forth. And what is it? Discipline is you're having a code of conduct, you're having a code of values and behavior, and you're having a social code, bringing these codes together and finally following the code in order to perform your day by day life activities. Now, not only us, even nature is under some kind of discipline. You may call those laws of discipline as laws of gravitation, as laws of planetary movement, and so on and so forth. What is it if not discipline? The moon is not turning left and right, it is going round and round the earth, and the earth is not wobbling here and there, it's going in a definite orbit round and round the sun. So all the objects of nature, they are bound by laws of nature, which is their discipline. And all the objects of social spheres, they are bound by the laws of social spheres, which is their discipline. So even history, when you look at the passage of time, even history follows some kind of discipline. So once you break the discipline, there is chaos, there is anarchy everywhere. And in this anarchy, there can only be destruction and no construction. And when we look at a person's history, that is one life, one person's life, we can very well translate the lesson of history into a lesson of person's life also. And we can conclude that discipline is essential for success in life. Thank you. तो ये एक छोटा सा उदाहरण था, आपको बता रहा था मैं एक टॉपिक को ऐसे ही लेकर के डिसिप्लिन वाले टॉपिक पर। ठीक है, अब एक और टॉपिक, पहले वाले टॉपिक की जो हमने बात की थी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी वाले टॉपिक की, तो थोड़ा 1-1.5 मिनट उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं ये कोई मॉडल स्पीच आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पीच एक्चुअली होता क्या है। देखिए, आपके दिमाग में विचार आते हैं, हर किसी के दिमाग में विचार आते हैं, उन विचारों को एक श्रृंखला में लगा करके और एक कंक्लूजन की तरफ ले जाना, भाई इसी को तो स्पीच कहा जाता है। तो हम 1-2 शॉर्ट्स में स्टेज फ्राइट की बात कर चुके हैं और स्टेज फ्राइट को हटाने के एक्सरसाइजेस के बारे में भी मैं एक एक करके आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आपसे ये बात क्यों कर पा रहा हूँ मैं आपसे ये बात क्यों कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर इसलिए रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको बोलने की ज़रूरत पड़ती है, उनको बोलना है भी लेकिन डर लगता है। तो एक तो मैं उनको ये सिखाना चाहता हूँ कि भाई कैसे ओवरकम किया जाए स्टेज फ्राइट, राइट। और मैं ही आपसे ये बात क्यों करूँ, तो भाई सामने सामने आपके मैं बैठा हूँ, आपसे बातचीत कर रहा हूँ, आपको लग रहा है क्या कि मुझे स्टेज फ्राइट है। इनफैक्ट मैं स्टेज पर बोलता हुआ भी आपको कभी दिख जाऊँगा तो दिखेगा नहीं आपको कि मुझे स्टेज फ्राइट है। और सक्सेस इसी बात में है। स्टेज एंग्जाइटी, जैसा कि मैंने आपको अपने एक शॉर्ट में भी बताया हुआ है, स्टेज एंग्जाइटी भाई हर किसी को होती है। बड़े से बड़े परफॉर्मर को भी स्टेज एंग्जाइटी होती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये साइकोलॉजिकल रिसर्च जो है उससे प्रूवन है।
हर किसी को स्टेज एंग्जाइटी होती है और स्टेज एंग्जाइटी एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, इसको परफॉर्मेंस में ट्रांसलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको अगर स्टेज एंग्जाइटी हो रही है, बहुत अच्छी बात। अब स्टेज एंग्जाइटी को दूर करने के तरीके और उनके एक्सरसाइजेज हैं, उनको आप फॉलो करेंगे और आप अच्छी तरह से इसको ओवरकम करेंगे और स्टेज पे परफॉर्म करेंगे, राइट। तो मैं आपसे सिर्फ स्पीच टॉपिक पे शेयर कर रहा हूँ, साथ ही साथ लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि आप इसको ट्रांसलेट करें अपने एक्शन में। आप खुद ये अपॉर्चुनिटीज़ खोजें जहाँ पे आपको बोलने की अपॉर्चुनिटी मिले, और उन अपॉर्चुनिटीज़ पे आप अच्छा बोल पाएँ, इसके लिए दो तरीके हैं। एक तो आप खुद को आईने के सामने परफॉर्म करते देखिए, पुरानी वाली मेथड, या अपने आप को स्पीच देते हुए या टॉक देते हुए या 1 मिनट कुछ बोलते हुए रिकॉर्ड करके देखिए। आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा कि आपके हाथ पाँव वगैरह, जैसे मैं तो आपको यहाँ तक ही दिखाई पड़ रहा हूँ, पर बेहतर हो कि आप खड़े होकर कैसा बोलते हैं और उस दौरान आपका हाथ उंगली वगैरह का मूवमेंट कैसा होता है। कुछ लोगों की उंगलियां ये कापा करती हैं, ठीक है, जब वो बोलने की बारी उनकी आती है स्टेज पे चढ़ करके, तो ऐसे ऐसे होता है, मैंने खुद अपनी आंख से देखा है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि स्टेज पर जो लेक्चर्न होता है उसको कस के ऐसे पकड़ लेते हैं दोनों तरफ से, ऐसे ऐसे ऐसे, और उसके पीछे ऐसे करके घुस जाते हैं ताकि उनका पाँव जो काँप रहा है वो किसी को दिखाई न पड़े। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाँव का काँपना आप छुपा लीजिएगा, हाथ का काँपना भी जेब में घुसा लीजिएगा तो छुप जाएगा। आवाज़ का काँपना कैसे छुपेगा, दिमाग में जो डर है वो कैसे छुपेगा, तो वो छुपता नहीं है और उसे छुपाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। उसको ट्रांसलेट कर लेना है हमको परफॉर्मेंस में, एंग्जाइटी को ट्रांसलेट करना है परफॉर्मेंस में, और वो तब होगा जब आप खुद को भूल जाएंगे और सिर्फ टॉपिक और ऑडियंस को याद रखेंगे। आपकी एंटिटी, आपकी सत्ता समाप्त हो जाएगी और सिर्फ आपको याद रहेगा कि आपको क्या करना है। तीर जो है, तीर, एरो को याद रहता है क्या कि वो कौन है, उसे किस लोहार ने बनाया था और किस खदान से लोहा निकल के आया था। ये सब अगर सोच में पड़ जाए तो लक्ष्य का भेद कैसे करेगा। एरो कुछ सोचता नहीं है, वो निकलता है और सीधा अपने लक्ष्य की तरफ जाता है। आपका भी यही काम है। आपका लक्ष्य क्या है, एक टॉपिक है, उस टॉपिक को ज़बरदस्त ढंग से ऑडियंस के सामने डिलीवर करना है, बस यही आपका काम है। तो अच्छी प्रिपरेशन, जिस स्टेप की बात हम करेंगे जिसको रिसर्च कहते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करना आपके प्रेजेंटेशन में या आपकी स्पीच में, उसकी बात भी हम लोग करेंगे। फिर उसका रिहर्सल करना, जो कि रिकॉर्डिंग की बात मैं अभी आपको बता रहा था, और फाइनली परफॉर्म करना। ये एक साइंस है, ये जादू वादू नहीं है, कोई की छड़ी घुमा दी और जादू कर दिया। स्पीकर कोई जादूगर नहीं होता है। हाँ, वो इतनी प्रैक्टिस करता है, इतनी मेहनत करता है, इतना अच्छा परफॉर्म करता है कि आपको जादू सा फील हो सकता है, पर वो जादू नहीं है भाई, उसने बहुत मेहनत की है, राइट। आप भी मेहनत करेंगे, आप भी परफॉर्म करेंगे, स्टेज फ्राइट, स्टेज एंग्जाइटी सब हम देख लेंगे, राइट। तो एक लास्ट टॉपिक की बात हम लोग कर लेते हैं और उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको पसंद आ रहा है हम जो भी कर रहे हैं यहाँ पे एक्टिविटी, अगर आपको अच्छी लग रही है, लग रहा है आपको इससे फ़ायदा हो सकता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। ये चैनल क्योंकि ऐसे काम करता रहेगा आपके लिए लगातार, आपको आपके लैंग्वेज स्किल्स में, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज स्पोकन और लिसनिंग और रीडिंग और राइटिंग स्किल्स में आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहे, क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं और ये एक स्किल है जो मैं आपको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको ट्रांसफ़र कर सकूँ। मेरे साथ आप थोड़ी मेहनत कर लीजिए और रेगुलरली कीजिए। ऐसा नहीं कि एक दिन 10 मिनट किया और दूसरे दिन 0 मिनट किया और तीसरे दिन 1 घंटा किया, ना 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 ना। आप 20-20 मिनट रोज़ कर लीजिए, आपका और मेरा काम हो जाएगा। करना क्या है, जो मैं कहता जाऊँ उसको आप करते जाइए। तो पहले मैं ये कह रहा हूँ कि विजुअलाइज करिए, मैंने 1-2 शॉर्ट्स में भी डाला हुआ है, विजुअलाइज एक्टिविटी जो आप सक्सेसफुल होते हुए दिखाई पड़े। दूसरा, एक्चुअल स्पीच की प्रैक्टिस करिए। मैं आपको एक शॉर्टकट दे रहा हूँ, बने बनाए 1-2 स्पीच, एक मैं बात कर चुका हूँ आपसे टेंटेटिवली, दूसरा अभी मैं आपसे टॉपिक पे बात करूँगा। तो टॉपिक लेते हैं हम, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ओके, ठीक, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। To say that, I have to take a deep breath and then think about the world around me. Some of my friends have started saying honesty was the best policy. Once there was a time, and especially in the Eastern context, in the Indian context, they call that time the Satyug. So once there was a yug, a time, an eon, if you want, the Satyug, when honesty used to be the best policy, but in this Kali Yuga, or the present rotten times, corrupt times, honesty is not the best policy. That's what they say. Now the question is, what are they talking about, and are they totally wrong? Now I will not give you a dishonest answer on this. Let's be honest about this. When you look around in this world
and you look at many successful people also, sometimes you feel like honesty was and not is the best policy. Sometimes you feel like it's better if we were dishonest and succeeded rather, to be honest and failed. So then you start prioritizing success over honesty, and you start shunning any thought of failure if that comes with honesty. So for you, success is the thing for which honesty can be sacrificed. Well. Sounds very practical, but this is a very short term view. And the reason behind this is that you are mistaking the ends for the means. This is, I'm not preaching you, man. I'm not preaching you. I'm telling you that this confusion is very, very dangerous for psychological, for social, and for practically speaking also for your overall health. So honesty, what is it? When you don't hide things from your own self. I'm not talking about honesty in which you hide things from others. I'm not talking about dishonesty when you tell lies to others. I say that honesty begins at home, which is you yourself. So honesty is when you don't tell lies to yourself. Honesty is when you are not afraid to accept truths about yourself and the world to yourself. And honesty is, I'm defining it here as, to begin with, honesty number one, the first kind of honesty is called self-honesty, without which you cannot live. I don't even have to prove that. You need to be honest with yourself, without which you will have many psychological problems, and the manifestations will show as they are showing in case of many countries. There are high rates of psychological instabilities and psychological problems, and at the base of all those things is personal dishonesty. So honesty is the best policy as far as a person, an individual's psychological health is concerned. One. Now we'll talk about social honesty, that is honesty among persons, interpersonal honesty. So intrapersonal honesty, I have probably shown you, is very, very essential. Interpersonal honesty, especially among the people who need to be with one another for long spans of time, say your family throughout the life, ideally speaking, many of your friends, and many of your acquaintances, and people of say your organization, your office, and so on and so forth. They know you. How can you hide yourself? You can tell lies to them, of course. Yes, you can tell lies to them. That's your choice. But then for each lie that you speak, and I'm practically speaking, you will have to prepare 100 more lies. And for all those 100 lies, then for every one of them, 100 more lies. And how much can you remember? 10,000 lies, okay. But then for every one of them, 100 more lies. So the number goes to us 10 lakh. And then remembering all those many lies, I think it would have been difficult for even Albert Einstein. So you are not the Albert Einstein of liars. Therefore, please do not tell lies to others also, because sooner or later, and rather sooner than later, it is discovered. And once it is discovered, once they start sometimes calling behind your back, sometimes at your face, once they start calling you a dishonest person, a liar, then you have a reputation, an ill reputation. And that reputation cannot be transcended. Practically speaking, I have seen very intelligent people, very successful people who have been branded, and not wrongly, branded liars in their own family, and their own wives, their own sons and daughters don't trust them. So interpersonal honesty, of course, I may have taken extreme example to show you something, but then after interpersonal honesty is also very essential. It remains the best policy. Now, general human beings, you and I, we are concerned only with intra and interpersonal honesty. But then, just to prove my point at the scale of the globe, honesty between countries of the world, I'm going to that level, between countries of the world, even honesty of international level is also advisable. I'll give you only one example. I don't know whether it is allowed or not, but then still I'll give you one example. And the example I'll take is from current history, and the name that I will present in front of you is our neighbor. Okay, I'll not name my neighbor, okay. Yeah,
it's a channel and the video is going public. So I'll not name that neighbor of ours, but then only I'll fill the details and you will understand. So this neighbor of ours is infamous throughout the world for funding terrorism. Now, this neighbor never accepts that it funds terrorism. Of course, that is not strategic, right? But then this neighbor is, I mean, everybody, every country, everywhere, at one time or the other, at least when we talk about Western countries, yeah? Not, I mean, I'm not talking about some Middle Eastern countries, but then the whole West accepts, and India always keeps on repeating this, that this neighbor of ours is a terrorist state, or at least a terrorist supporting state. So we all know that. And whatever this neighbor of ours can do, whatever it says, and whosoever is saying that, even up to the rank of their president and prime ministers, when they say that, nobody believes that, right? So this is the extreme case of international dishonesty. And even there you see, it does not pay. In the long run, it does not pay. So I repeat, intrapersonal, interpersonal, and international, up to that level, honesty is the best policy. Okay, so that is that. तो आशा करता हूँ कि थोड़ी लंबी हो गई स्पीच में, थोड़ा भावनाओं में बह गया था स्पेशली जब हमारे नेबर का नाम आ जाए तो भाई ये सैम्पल स्पीच है भाई, ये कोई आइडियल स्पीच नहीं है. आप हमेशा इससे बेहतर स्पीच देंगे, आप हमेशा इस पर तैयारी करेंगे और अच्छा बोलेंगे. ये तो मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स से प्रॉमिस किया था कि मैं अपलोड कर दूंगा, तो मैं वो कर रहा हूँ और थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा इसको. तो आप देखिए इससे और इसको एनालाइज करिए, इसकी कमियां निकालिए, इसमें क्या अच्छी बात है वो देखिए. कमेंट में मेरे डालिए कि सर आप ये कह सकते थे, या ये आपने जो कहा इसमें और बेहतर किया जा सकता है, या और भी अच्छा है. आप खुद अपना वीडियो अपलोड करके मुझे लिंक भेज दीजिए, मैं उस भी वीडियो को देखूंगा. आप गूगल ड्राइव पे डाल दीजिए, यूट्यूब पे अगर आपका चैनल है उस पर लगा दीजिए, और जुड़े रहिए हमारे साथ, संवाद जो है स्थापित करे रहिए. मुझे बताइए, मुझे दिखाइए कि आप क्या कर रहे हैं. आप में से जो मेरा फीडबैक चाहता है, डेफिनेटली वो अपनी रिकॉर्डिंग्स की लिंक मुझे शेयर कर सकता है. हमारा मेल ID winners.h.english@gmail.com. आई रिपीट, winners.h.english@gmail.com है. मैं लगातार आपकी स्पीकिंग में, लिसनिंग में, रीडिंग में, राइटिंग में हेल्प करता रहूँगा. ऐसा करने से मुझे अच्छा लगता है. अगर एक व्यक्ति की भी मैं हेल्प कर पाऊँ तो मुझे बहुत फुलफिल्ड फील होता है. मैं हिंदी मीडियम का हूँ और मेहनत करके अंग्रेजी सीखी है, मिली नहीं है. जो भी है, एक एक शब्द जो मैं बोल रहा हूँ मैंने लिया है, सीखा है, मेहनत से किया है. ठीक है, वही मेहनत आप भी कर सकते हैं. आप भी मेरे जैसे ही लोग हैं, करेंगे. आप मेरे साथ रहिए और बिल्कुल हम करेंगे. Therefore, स्टेज फ्राइट, स्टेज एंग्जाइटी, इसको परफॉर्मेंस में हम कन्वर्ट करेंगे, और आप सब और मैं, हम सब मिलके आगे बढ़ेंगे. बिकॉज विद वी यू विन. Thank you very much. Don't forget to like and subscribe.